Good evening, everyone. Hello. I hope I'm audible enough for each and everyone. Myself, Loveless Sharma. Welcome to Epic Learning Center. Our today's webinar will be on short-term stock tips. Prior to this week, we have had a webinar on global currency market. We also have a webinar on weekly stock cash and stock future tips. Some of them gave good return, while some of them are still open. So at Epic Research, this particular webinar focuses on sharing our ideas, sharing our knowledge with each and every client. It can be from equity, future, option to commodities or agri commodities. We also encompass global investors who trades in COMEX and Forex market. We'll have this webinar go through certain slides. And as I begin, I also want each and every one of you to have a pen and paper with you. So if you in case have any doubt, you can ask that at the end of this webinar. About Epic Research. Epic Research Private Limited is a SEBI registered advisory firm. We have been awarded and rated by NSIC, SMERA, Dun and Bradstreet, and we have won Leadership Excellence Award having its presence in India, US, Australia, and Middle East covering Singapore and Malaysian market. We have over 10,000 satisfied customers and have been giving around 80% accurate trading calls. We provide a need-based expert advice in various domains. As I said, these domains can be from equity, commodity, COMEX, currency, both domestic and international. We also provide premium research report to our clients on daily and weekly basis, and that is uploaded on our website on the same time horizon of each of these services. We also have corporate research solutions. These particular solutions are provided to our HNI, ultra HNI and corporate clients who want a need-based expert advice. It can be from stock, it can be about the market, it can be about currency, commodities, agri commodities. So we provide a customized research solution for them and help them have their clients being satisfied. Well, this is the content we'll be going through this presentation. I've tried to keep it short. I've tried to use much of the charts, and our content is basically from trading strategies, which will begin to specific things like Nifty analysis, the technical analysis. I'll be explaining you about the Nifty short-term trend, what is the supports, resistance, what is the overall market outlook, and then I'll share three short-term stock tips with you, which are uh, seen and being critically examined to give you, and then I'll take up your queries. So please, I request each and everyone to grab a pen and a paper and also write down your queries in case you have any. But to start with, we have certain trading strategies which encompasses each and every client from each and every sector. These are very general in nature but have a very uh, higher effect on the overall trading pattern and styles of the traders that are intraday, positional, or short term. First is only buy above or below the level suggested. Of course, when we generate calls in the market, try to have a buy or above below level and trade according to that. Do not take any position prior to our level or before our level because that will result in capital erosion or loss in intraday or as per the service basis. So try only to have a buy above or sell below the level. In case we give a call or recommendation at CMP, that means the uh,
signal has been generated in this particular commodity or particular script, and you have to buy at CMP, but you need to be very sure about buy above or below the level. So level is very important. Please keep proper stop loss in all your trades. If you don't, you will have a capital erosion in the end of the day. So please put all your stop losses in all the trade. Keep booking profit as we suggest or as we recommend, and trail the stop loss as advised, because if you don't trail or if you don't book profit, you'll actually end up losing the money which you were earning in the market. So book partial profits and trail stop loss to cost or just above cost, so that you don't have to suffer your profit which you have earned in any recommendation by not trailing the stop loss and keeping it original. So trail the stop loss as advised. Not trade in trials, only observe the calls. We give trials to make you aware about the call, the type of call we give, the return we give in a calls. So try to observe them, try to get a rhythm with them, don't trade on them. Never overtrade, don't invest all your capital into a single recommendation or investment advice we give. Try to balance out your capital. Ensure that you are investing 30 to 40% in a single recommendation, so you have other left for any other recommendation that we give. These are some important trading strategies which you need to make. If you try to maintain these strategies, you'll end up having a marginable profit at the end of the trading session. Never trade on rumors. Of course, do not trade on rumors. We have a very old saying in the market: buy on rumors, sell on rumors, but don't trade on rumors. Sometimes people get stuck. There are many companies, there are many advisors. I've seen clients losing basically on rumors. So don't trade, because whenever there are rumors in the market, the script or the particular commodity or particular equity script can be having a less volume, and a rumor is created to make sure the volume is generated through word of mouth or something. Or commodities, we have seen volatility. So there are certain rumors which come into the market, but don't trade on them. Trade on levels, trade on analysis. So you have a better uh, efficiency and better prospect of having the target and profitable trades. Always consult our advisors in case of any confusion or query, because until unless you don't communicate with us or share your query or ask about your confusion, you will be in dilemma. So try to consult our advisors as much as you can. You can mail us at info@epicresearch.in. You can call us on our numbers which we have mentioned on our websites. So try to communicate as much as you can. We suggest to trade on all our calls and maintain uniformity in trading patterns. As I've suggested, you have to trade on all our calls. Try to maintain uniformity in trading patterns. Invest equal amount of capital in each and every recommendation. Do not change the trading capital lots in the middle of the month, as this will disturb your risk reward ratio. If you change that in the middle of the month, your overall churn out of the portfolio that is designed to have optimum result according to the service will get hampered, because somewhat imbalance or change in the portfolio or capital or number of lots in the middle of the month will affect the profitability you will have on the portfolio. So do not trade, and that will actually disturb your risk reward ratio. Those trading in single lot need to book profit in first target itself. If you're not booking first target profit in single lot, you are actually having a more space of risk involved in your trade. So try to eliminate that risk by booking profit in first target itself, because as you are working in single lot, so we assume that you have a very limited amount of capital you are trading with. So try to book profit in first target itself. Don't wait for second target, rather invest in any other recommendation that we provide. Now, coming on to the specific part of this webinar about short-term analysis of some of the stocks and short-term picks for you. But this is the Nifty chart. This is actually a daily chart, because weekly chart would have been much smoother. But overall daily chart will actually give you some kind of insight and volatility of the market that we are seeing in present. See, this is the overall chart of the Nifty, and the market has been in downtrend for past 5 or 6 months. If you see here in February,
it almost made a top, and we have seen uh, downtrend starting from this particular level of 9,000, and we have corrected to 7950, almost more than 1,000 point. After this, the market actually reversed and we have seen a higher top, higher bottom formation. The market has breached 85, 8400 levels over here, and it went up to 8650, 8660 levels. And then suddenly we have seen a sharp decline. Now, this overall has been a trading range. Uh, if you have noticed, this has been for past 1.5 month overall trading range of Nifty, that is 8600, 8630 to 8300 on the downside, and today is closing at 8368. 8368.20 has been near to the lower range of the trading range which we have mentioned over here. Now, why is it important that many of the things in the market has happened in past few months, like Greece crisis, federal rate interest rate hike? We have had RBI policy previous week, and there was no change in the repo rate. So this is the overall range. Now in this chart I have put some arrows over here, because in the past, if you see, 8300 has always been a key uh, player, and it actually supported the market here, if you see. And today is closing at 8368.20, uh, is very close to this level. So this particular level is very important to watch out for. I would suggest traders that Uh, if market closes below 8300, there will be a downfall in the market, and we will have a further space of correction, and this particular range can be seen to 8000 level. So I would request each and every trader to keep a close eye on Nifty. If it closes below 8300 on a weekly basis, we might again go into a short-term correction to 8000, 8100 levels. But until unless this particular level is holded of 8300, we can also see a bounce back to 8650 level in the short term. This is the overall Nifty chart, and this is the trading range. Upside is 8650 and downside is 8300. But if it closes below 8300 on the weekly basis, we may see some further trigger off in the market. A lot has been happened in the past few month. मैं हिंदी में भी बात करना चाहूँगा अपने ट्रेडर्स के लिए. बहुत सी चीज़ें हुई है लास्ट एक मंथ में. हमने देखा है कि जीएसटी जो बिल है करंटली, वो पोस्टपोन हो गया है विंटर सेशन के लिए. मॉनसून सेशन जो था पार्लियामेंट का, इट वाजंट फ्रूटफुल. इतना उसमें इतना कुछ हमने देखने को नहीं मिला है. कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स जैसे लैंड रिफॉर्म बिल, जीएसटी, इन पे एक कुछ डिसिसिव स्टेप हुई थी, वो नहीं हो पाई है, और उसको विंटर सेशन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. तो ये एक आज जो ट्रिगर थे मार्केट में, उन्होंने अपना एक तरह से बोले तो अनवाइंड करा है. रिसेंट एक चाइना ने अपनी करेंसी युआन का डिवैल्यूएशन करा है. इसकी वजह से हमको और एक गिरावट देखने को मिली है. उसके अलावा आरबीआई अगर हम देखें तो एक एक्सपेक्टेड था रेट हाइक, बट इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मॉनसून हमने देखा है अच्छा हुआ है. तो आरबीआई ने कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव होकर एक इन्फ्लेशन जो महंगाई है उसको अ, प्रमुखता दिखाई है, और मार्केट्स कहीं ना कहीं उस वजह से वीक हुए हैं. तो हमने आप देखिए तो ये जो पर्टिकुलर एक गिरावट है 8600 लेवल से, इसमें काफ़ी कुछ ये सब चीज़ों का एक सेंटिमेंट जो बना हुआ था मार्केट का वो टूटा है. और निफ्टी ने एक स्लाइड दिया है ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का, 8650 से, और करंटली 8368 आई गई है. 8300 अगर मार्केट तोड़ता है वीकली बेसिस पे, तो हमारे पास नीचे में बहुत ओपन स्पेस रहेगा शॉर्ट
अपॉर्चुनिटीज के लिए। बट अगर हम देखें तो ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो बुल है। मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है पास्ट कुछ महीनों से। तो ओवरऑल चार्ट पे स्ट्रक्चर बुलिश है। कुछ एक दो सेंटिमेंट्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं मार्केट को। और फंडामेंटली हम बात करें तो आने वाले समय में जो हमारा ये क्वार्टर शुरू होगा, दूसरी तिमाही शुरू होगी फाइनेंशियल ईयर 16 की 17 की, उसमें हम काफ़ी पिकअप देखेंगे ग्रोथ में। हमारे एक जो डेटा काफ़ी कुछ आएंगे, आईआईपी सीपीआई, उन पे कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मार्केट में इस समय रोल प्ले करेगी। थोड़ा सा मार्केट अभी डल है ग्लोबल sentiments or domestic sentiments के साथ. So there are certain factors which we need to look at, and you guys must be aware about what is happening, and need to know the levels. 8300 and 8650 is the trading session range, and इन दोनों के बीच में ही फिलहाल ट्रेड करेगा। 83 अगर हमको ब्रेक करता हुआ दिखता है तो एक वीकनेस मार्केट में बनी रहेगी। फिर भी हमारी जो रिकमेंडेशन है वो बाय साइड ही है। और जो भी हमने रिकमेंडेशन ली है, थोड़ा सा मैंने कोशिश करी है उनको अलग अलग सेक्टर से लेने की, जिनमें एक अर्निंग्स की जो पॉसिबिलिटी है, कहीं ना कहीं यूएसडी आईएनआर का भी उसमें रोल प्ले होता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने इस पर्टिकुलर पिक्स में कोशिश करी है इंक्लूड करने की। जो हमारा पहला ही काउंटर है दैट इज एचसीएल टेक्नोलॉजीज। अगर हम देखें तो करंटली आप एक यूएसडी आईएनआर का जो मूवमेंट है उसको देखेंगे तो इट हैज़ बीन पॉजिटिव। यूएसडी आईएनआर जो है एक 61 के लेवल से आज हमने देखा है कि उसमें एक ब्रेकआउट हुआ है 64 लेवल्स पे, एंड उसको सस्टेन कर रहा है। एच सी एल टेक इज वन ऑफ द प्लेयर्स जो हमें फंडामेंटली एंड टेक्निकली बहुत अच्छा लगता है। फंडामेंटली तो हम इतना आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं यूएसडी आईएनआर जो रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, या आप बोल सकते हैं डॉलर जो अप्रिशिएट हो रहा है रुपी के अगेंस्ट, उसका फायदा इस कंपनी को आने वाले कुछ समय में इसकी अर्निंग्स में दिखेगा। क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए जिसका ज़्यादातर क्लाइंट बेस यूएस एंड लेटिन साउथ अमेरिका में है, फंडामेंटली इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। काफ़ी कुछ चार्ट पे भी स्ट्रक्चर वैसा ही बना हुआ है। आप देखें तो एक हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है, और दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स व्हेन वी हैव अ टेक्निकल एनालिसिस। सो इफ यू सी दिस पर्टिकुलर काउंटर 2014 की स्टार्टिंग जनवरी से हम देख रहे हैं कि एक हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर चार्ट में। आप देख सकते हैं मैंने इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है ताकि आप समझ जाएं कि मैं किस तरह से इसमें एक टारगेट आपको दे रहा हूं। Currently 970 के लेवल्स पे यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज आल्सो वेरी फेवरेबल फॉर ट्रेडर्स हु हैव अ शॉर्ट टर्म व्यू इन द टिल दिवाली और से सितंबर एंड और अक्टूबर मिड, जब वी विल हैव मोर confined approach towards quarterly earnings as well. So, ये पर्टिकुलर लेवल्स हैं। 970 पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल है। डाउन साइड यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक 920 से 925 के लेवल का है, विच आई हैव ट्राइड टू मेंशन है। वन कैन बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक फॉर द टारगेट ऑफ 1040 एंड 1050। द स्टॉप लॉस इज 925। अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म नज़रिया अपना बढ़ाएंगे एंड इफ यू कैन होल्ड ऑन टू दिस पर्टिकुलर काउंटर, आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर काउंटर का टारगेट ऊपर में 1150 है, and this particular stock will outperform IT index. We have seen performing well as compared to other index because of USD INR volatility, and this particular counter is being very attractive on the charts technically as well. So we'll have a buy recommendation on HCL Tech. The current market is 970. You can buy it in the range of 970 to 975. You'll have a target of 1040, 1150, and you can put a very small stop loss of 925. Risk reward भी यहाँ से काफी favorable है, and the returns are good in the short term. If you have any queries about this particular counter, or you have any query about the market, please note it down.
so that I can answer that at the end of this session. My next counter would be from a pharmaceutical space, Lupin Pharmaceutical. I've chosen pharmaceutical space because it is somewhat a very conservative space, and we have seen a good returns in the past 1 year from this particular space only. Pharmaceutical has been the outperforming space sector in the overall market, and it has given one of the best returns as compared to other sectors. लुपिन अगर हम चार्ट देखें तो ओवरऑल बुल स्ट्रक्चर में है, देयर इज नथिंग टू वरी ऑन द चार्ट्स। पिछले 3 या 4 सालों का भी आप चार्ट देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस जो एक कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए लोग मार्केट में एंटर होते हैं, या शॉर्ट टर्म व्यू, या थोड़ा सा एक मिड टर्म 6 महीने का भी मैं व्यू ले लूं, तो जो ट्रेडर्स बाय करते हैं पर्टिकुलर अवधि के लिए, जो मैंने बताई है, उनके लिए बहुत अच्छा एक पर्टिकुलर काउंटर है। कंटिन्यूस इसने ओवरऑल आप देखें तो अच्छा ही रिटर्न दिया है। एक 400 रुपये आप देख रहे हैं इस चार्ट में, ये जब एक स्प्लिट हुआ था 1900 या 2000 के लेवल से कुछ साल पहले, ये 350 से 400 के आसपास आया था, 10 टाइम्स स्प्लिट हुआ था ये। एंड आप देखें इसमें तो ये पर्टिकुलर काउंटर हमेशा से ही पॉजिटिव है। आप देखिए कहीं ना कहीं इसमें इतनी वीकनेस नहीं है, ये काउंटर ने हमेशा अच्छा ही रिटर्न दिया है। ये काउंटर वो ऐसा काउंटर है जो आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं, बिकॉज इवन आउट करें आप इसको एवरेज करें तो ओवर अ लॉन्ग टर्म होराइजन ऑफ 1 to 2 ईयर 3 ईयर, ये आपको एवरेज आउट जो रिटर्न देगा वो एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स काफी अच्छा होगा। आप देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची है 2014 नवंबर से अक्टूबर नवंबर के लेवल से ऊपर की तरफ ही इस पर्टिकुलर काउंटर ने करा। एक इसमें शार्प राइज आया था जब इसने 1000 का लेवल तोड़ा था, वहां से इसने 2000 का लेवल मात्र कुछ ही महीनों में एक रिटर्न खुद को डबल कर लिया था पर्टिकुलर स्टॉक ने। अभी इसने एक 2000 से एक थोड़ा स्टॉप बना के एक 1600 तक की गिरावट आई है, जो हमने बाकी फार्मास्यूटिकल स्पेस में भी थी, जो होती रहती है मार्केट में। दिस इज व्हाट द करेक्शन इज ऑल अबाउट, एंड गिविंग अदर इन्वेस्टर्स टू अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू अ पर्टिकुलर स्टॉक। जब थोड़े से वैल्यूएशंस और फंडामेंटल आपके थोड़े से ईज ऑफ हो जाते हैं, टेक्निकली ऑल्सो यू विल फाइंड स्टॉक एट वेरी गुड लेवल्स। सो दिस इज वन ऑफ द ट्रेंड लाइंस एट 1720 लेवल्स करंटली। यहाँ से इफ वी सी आरएसआई एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से रिटर्न हो ही रहा है, एंड 1726 से रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी फेवरेबल बन जाता है। यहाँ से 50 से 60 रुपए का एक स्टॉप लॉस मैंने सजेस्ट करा है यहाँ पे 1670 का। और यहाँ से हमें एक शॉर्ट टर्म में ये जो एक पर्टिकुलर आप देखिए चैनल, तो ये एक अपसाइड है 1726 से, इसमें 1800 का टारगेट है पहला, और दूसरा टारगेट 1880 का है। मैं ये भी कहूंगा अगर कोई थोड़ा सा और लंबा नज़रिया लेकर मार्केट में एंटर होता है तो आप वेट करिएगा 1880 1900 लेवल ऐसे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए कि अगर इसने ब्रेक करा तो इसके पास और स्पेस आता है ब्रेक करने के लिए। एंड 2200 टू 2250 इज वन ऑफ द लेवल्स जो ये आपको आने वाले कुछ लंबे नजरिए के साथ रखें तो दिखा देगा। शॉर्ट टर्म में इसमें रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल है। एक 60 पॉइंट का एसएल है 1670 का, आप उसके साथ उसमें बाय करें और टारगेट आप 1800 1880 लगाएं। प्लीज पुट ऑल योर स्टॉप लॉसेस, डोंट इन्वेस्ट ऑल योर कैपिटल इनटू ऑल दीज ट्रेड्स, ट्राई टू इन्वेस्ट पार्शियल कैपिटल इनटू दीज ट्रेड्स। आप ज़्यादा एक्सपोजर ना ले मार्केट में, क्योंकि करंटली मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल भी है, तो पूरा एक्सपोजर ना लेते हुए आप शॉर्ट टर्म नज़रिया रखें और अपने कैपिटल का सेफ साइड एक आप 20 to 30% ही इन्वेस्ट करें, दैट विल बी मच बेटर। थर्ड माय काउंटर इज अशोक लेलैंड। ऑटो एंसिलरी स्टॉक है, ऑटो सेक्टर से आता है। इट इज बेसिकली इनटू हेवी कमर्शियल व्हीकल्स, ऑल्सो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की एक लाइन कंपनी के पास है। फंडामेंटली बात करें तो ये स्टॉक पर्टिकुलरली हमने 56-57 के लेवल्स से भी रिकमेंड करा था अपने क्लाइंट्स को। आप देखें तो it has beaten overall doubled itself in past 1 year, and currently stock 88.3 के लेवल पे क्लोज हुआ है।
if you have seen, ये एक देखिए आप, this is the overall trend and this is the overall chart formation. आप देखें तो ये एक ब्रॉडर रेंज है चार्ट की जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एंड फंडामेंटली बात करें तो ऑटो डिमांड हैज़ रिसेंटली picked up and it is expected to pick up due to the creamy season of this particular industry as we enter into festive seasons, which will go till December and January. So there are a lot of uh, expectation of this particular sector to outperform many other sector in coming few months. ये स्टॉक ओवरऑल देखे तो हाई पे ही है, लाइफ टाइम हाइस पे ही है। 89-90 का इसका लाइफ टाइम हाइस है। आज भी इसने एक ब्रीच करके 88.3 पे क्लोजिंग दी है। आई लाइक दिस पर्टिकुलर काउंटर स्पेसिफिकली बिकॉज इसके चार्ट में काफ़ी क्लैरिटी है। देर इज नथिंग एज एनी डिस्ट्रप्शन, कोई इसमें इतना रेजिस्टेंस नहीं है अपसाइड में क्योंकि ओपन टेरिटरी है। कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल फंडामेंटली, बट टेक्निकली अगर हम बात करें तो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन चार्ट्स डिस्पाइट अ फॉलिंग मार्केट इन पास्ट फ्यू मंथ। अगर आप देखें, मैंने आपके साथ निफ्टी का चार्ट शेयर करा था। आपने देखा होगा 2014 से अगर हम बात करें तो निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में था। 15 स्टार्टिंग से 2015 की स्टार्टिंग से ये पर्टिकुलर काउंटर आप देखिए तो ओवरऑल पॉजिटिव है और 42-45 के लेवल से इट हैज़ गिवन रिटर्न अप टू 90, ऑलमोस्ट डबल करा है। टेक्निकली बात करें तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर फेज था जब ये कंसोलिडेट हुआ था, जब मार्केट इनफैक्ट 600 से 368 आया है आज कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। तब भी आप देखिए तो ये काउंटर गिरा नहीं है, इनफैक्ट इसने ओवरऑल कंसोलिडेशन ही करा है एक 3 से 4 रुपए की रेंज में एंड इट हैज एक्चुअली गिवन अ पॉजिटिव क्लोजिंग टुडे इटसेल्फ। ये काउंटर फेवरेट अमंग द ऑटो सेक्टर भी है एंड अमंग द मार्केट भी है। रिस्क रिवॉर्ड करंटली यहाँ पर फेवरेबल है। इट इज़ वन ऑफ द काउंटर्स जो आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर काउंटर इज वेरी heavy, having a heavy weightage in the market to particularly HSV, high commercial, heavy commercial vehicle and light commercial vehicle, and certain product line has particular company की which will be coming in a few months। and यहाँ से currently आप बात करें levels की तो यहाँ से risk reward ratio is still very favorable। 88.3 पे क्लोजिंग है। 92 एंड 95.5 इज द अपसाइड टारगेट। मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ये पर्टिकुलर देखेंगे आप तो सपोर्ट का काम करा है। ये एक पर्टिकुलर 85 का लेवल अब इसका सपोर्ट बन गया है, जबकि आप अपसाइड देखें तो समवॉट एक 92 और 95.5 इस पर्टिकुलर काउंटर के लेवल्स ऑन दी अपसाइड आते हैं। आप इसको बाय कर कर चल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। You can keep a stop loss of 85 for the target of 92.5. Overall, if anybody has a long-term view of having a good stock, automotive sector से एक particular stock किसी को अपने portfolio में रखना है और जिनका थोड़ा लंबा नजरिया है निवेश का मार्केट में, तो ये particular counter कर सकते हैं। करेक्शंस पर्टिकुलर काउंटर में इन अ लॉन्ग टर्म आएंगे, बट एज कंपेयर टू अदर काउंटर्स इन ऑटो सेक्टर दिस stock is very bullish on the chart, so one can also buy for long term, but in short term it is very favorable in the market and current levels पे भी it has a potential to go to the 92 and 95.5 levels. Please put a stop loss as 85 and please keep it strict on daily basis. um, If you have any queries related to these stocks, you can please note it down and ask. I'll share some tools with you. These are the tools which we share with our client. We believe in very transparent process and we have made some changes in our track sheets and reports as well. We have put on timings and each and everything on our website so we can have a transparent process with each and every clients, and we regularly update all of these on our website. You can visit them at these addresses I have mentioned. We have a track sheet at epicresearch.co/track sheet section, and you can visit our reports and read them out from equity, commodity, agri to currency market on research reports at epicresearch.co/report. Weekly reports are also there, and you can also visit our Singapore website in case you are an international investor. You can visit Singapore website at www.epicresearch.sg. This is all on my side. I'll be taking up your questions for the next 5 minutes, 10 minutes, and then we'll end
this particular webinar. Please, if you have any queries, you can ask them. And if you have any particular stock, or if you have any particular position as well, you can mail them at info@epiclearning.in or info@epicresearch.co, and we'll be happy to answer that and solve your queries. Well, we have first question of I think he's a very new to the market. He's asking about he's new to trade but want to know how it functions and want to invest money. Please advise what is the first step. See, if you are new to the market, I would ask you to regularly update with yourself market. You with market, you can visit many websites like Money Control or other news channel. Try to update with the website. All you need is a financial advisor and who can consult you. So I would request you to please uh, visit www.epicresearch.co. The financial advisors at our end will try to assist you. If you want to invest in the market, you can also mail us at info@epiclearning.in, and we'll try to have a solution for you. And if you are looking for a long term, short term, or any particular investment you want to do in the market, because there are technical as well as